हर रात तो भाई लोग, सेल्सफोर्स प्रैक्टिस में हो या फिर यू आर लुकिंग योर कैरियर इनटू सेल्सफोर्स डोमेन राइट नाउ, ओके। अर्ली करियर है, लाइक 1 साल 2 साल आपकी हुई है, ओके। और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लाइन ऑफ अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ जाऊँ, ओके। क्योंकि अगर मैं सेल्सफोर्स पे बात करूँ तो जो भी अर्ली ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट, अभी जो कॉलेज से निकले होंगे, बहुत लोगों ने आपको सजेशन दिया होगा कि सेल्सफोर्स कर लो, इसके डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा स्लो है। तो बहुत सारे ज्ञान आपको मिल रहे होंगे कि ये कर लो, कोई बोलता होगा सैप कर लो। तो मैं इस वीडियो में सेल्सफोर्स के बारे में मेनली बात करूंगा। What are the trending things that you can adopt in this 2025? So if you are a recent college graduate, if you are a professional who is looking a career switch into Salesforce domain, और Salesforce domain में जाने के लिए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, बेसिक स्किल सेट क्या आपको आना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उसमें कितना टाइम लगेगा, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम, और कैसे बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, अ कंप्लीट रोड मैप आई विल बी गिविंग इन दिस वीडियो। इफ यू हैव स्टार्टेड योर कैरियर इन सर्विस बेस्ड कंपनी एंड looking a switch into a product based company, or looking a switch into a development role in a good company or a service based company only, so I will be talking in this video. So before starting the video, I'd like to introduce myself. I started my career itself in Salesforce as a developer and now into the analytics role, trying to move into product management side. Okay, so this is my career. I have experienced more than 4.5 years living in Bangalore since long around my experience, and yes, I love making videos regarding IT companies, college, reviews, placement experience, technology, switching on-site technology के बारे में बकवास करना, बताना क्या सही है, क्या गलत है, onboarding related, offboarding related, switching related, और कुछ भी जानना हो, क्रैकिंग, Salesforce job cracking, business analytics job cracking, JDS associates cracking, and lots of other things. Do watch this video till end. You will get to know that what actually I want to convey. Okay. बट हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जस्ट लाइक यू ऑल गाइज, आई एम ऑल्सो एन IT प्रोफेशनल, ओके, ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर वी ऑल कैन शेयर द जेन्युइन एक्सपीरियंसेस। तो ये सारे बातों को साइड करते हैं। आई टोल्ड अबाउट मी एंड व्हाट आई एम टॉकिंग इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर एन अर्ली कैरियर इनटू अ सेल्सफोर्स, तो सबसे पहले क्या देख रहे हो भाई इस मार्केट में, ये बताओ क्या चल रहा है। अगर आप अभी गूगल पे लिखोगे ना, इट्स एन AI ड्रिवन मार्केट, ठीक है। आप एडमिन कर लो, डेवलपमेंट कर लो, LWC कर लो, एपेक्स कर लो, फ्लोस कर लो, जो करना है कर लो, ओके। बट अ टॉप अप ऑफ AI ना इन योर CV, इन योर सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस कैन गिव यू एन बेटर अपॉर्चुनिटी एंड इंटरव्यू कॉल। होना नहीं होना टोटली डिपेंड अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, बट राइट नाउ वी आर इनटू द एरा, और वी आर इनटू द जोन वेयर कंपनीज आर अडॉप्टिंग AI एंड एजेंट्स, ओके। अगर आप एज एडमिन भी जा रहे हो ना, तो कंपनी आपको एक्सपेक्ट करेगी कि यू आर अवेयर अबाउट AI प्लेटफॉर्म, AI लेवरेजेस, हाउ यू कैन बिल्ड एजेंट, हाउ यू कैन ट्रेन एजेंट, हाउ यू कैन सेट अप द एक्सपेक्टेशन टू एन एजेंट, हाउ एजेंट कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ एनी सपोर्ट वर्क दैट इज इनटू द सिस्टम, okay. There are n number of process that is being automated. So if you are a person who is looking your career into a Salesforce domain right now, if you are practicing into agentic AI stuff, I am telling you there will be a slighter higher side to get into this domain, and that can pay you better. Why I am telling right now, the admin and a business analyst or a developer is not only who have to only code as per the user story. You are the person who have to drive the application efficiency, okay. You have to use AI, you have to know the use cases, you have to fill the gap. Nowadays admin are not the one who is only giving a user licenses and all. उसके लिए एजेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। यू नीड टू नो हाउ टू लेवरेज एजेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट एन यूजर वेन एवर अ इनपुट फॉर्म कमिंग टू योर सिस्टम, okay. How to check, what are the control checks and logics that you can write and train to the user agents, how agent can work and be reactive within 24 hours of the request raised. So you have to think and you have to implement agents. So अभी बहुत सारे प्रोसेस का जब ऑटोमेशन होगा ना, obviously there will be a demand of agentic AI engineers, okay. जो भी Salesforce डोमेन में agentic AI की तरफ एक्सपोजर जिनको भी होगा उनको लिया जाएगा। मोस्टली जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, एडमिन में है और अपने आप को एक्सपोज दे रहे हैं, एक्सपोजर कर रहे हैं मतलब AI स्टफ की तरफ, तो दे विल बी डेफिनेटली अ प्रेफरेबल वन, ओके। जो लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को नहीं, मुझे AI की तरफ नहीं जाना, ओके, आई वांटेड टू बी इनटू द डेटा एनालिटिक्स एंड स्टफ एंड ऑल, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट टू।
A Salesforce can be a future data hub because see entry point of data will be there only. If you are looking into the business right now, it's a cloud-based CRM which is easily accessible from mobile phone, tablet, laptops and all. Many companies are adopting in order to store their confidential sales data, marketing data, service data, educational data and health data and lots of other stuff. When the data source and the data lake will be into the Salesforce somewhere, those data will be useful in order to predict business and do certain analysis regarding multiple stuffs in business. Okay, so at this point of time, if you are getting into the domain, understanding the business object classes and how to interpret with the data that are present in the system, definitely that can be one of the opportunity for you all guys. अब इसमें भी अगर आप AI का टच पॉइंट जान रहे हो, ठीक है, हाउ यू कैन यूज AI in order to do analysis, predict some number, do check up the number, because see data are into the system. It is like take data into the system, stored into the object and field that can be useful in order to predict a better number, in order to predict a better business solution. ओके तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप AI की तरफ अपना मूवमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आप डेटा, बिजनेस, AI तीनों की अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। सेल्सफोर्स फीचर की आपको, सेल्सफोर्स एप्लीकेशन की आपको लेवरेज फीचर पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन लेवरेज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन इनकलकेट, हाउ यू कैन सॉल्व द बिजनेस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक अप इन ऑर्डर टू प्लान योर जर्नी, इन ऑर्डर टू प्लान योर प्रोडक्ट एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एंड what I can say, implement and transform the digital business. Okay, because you are the sole responsible to drive this stuff, whether you are an admin, analyst, or a developer. Okay, because we are in the world where no specialized. We are getting into the world where no one will be specialized as a developer, admin, analyst, or something. It will be like a generalist as a Salesforce developer or a Salesforce platform, because somewhere AI is helping you out to drive into the skills that you are having and also leverage AI and implement stuff using AI. So you will be not an expert but a generalized expert for Salesforce platform. So you can get into an AI stuff. Okay, try to learn agentic AI, try to complete all those courses, modules, trailhead from there. Try to cover up all the analysis, data understanding, business understanding, how exactly it work. Now talking about the opportunity in Salesforce. So right now if you are looking into the domain, if अगर आपकी 2 साल हो गई है कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब, बिकॉज आपकी जो पैकेज अभी होगी 5-6-7 लाख के आसपास टेंड अराउंड कर रही होगी. आई वुड रिकमेंड यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब इन द मार्केट. यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग अराउंड 14-15x for LPA. Okay, what you need to do, you need to work on the use cases, what implementation you have done, what project you have did, put it to your CV, what are the skills, and you know how you can leverage all those skills in order to deliver a proper output. These are the basic expectation a company will be having from you. If you are clear with all this stuff, definitely a company will be hiring you up, depending upon how you answer, what you talked about your development, or what to talk about the business requirement, how you develop a solution, and yes, you can be eligible for an opportunity in an outside company. What you need to do, you just need to keep on applying outside. Apply as much as possible. Apply into the good company. If you are 2 years, 3 years experience, there are multiple openings in Salesforce only. The name of the roles are like technical associate, technical consultant, technical support engineer, TSC2. Okay, Salesforce developer, MTS, I think it's of next level, but all these roles are paying minimum 20 LPA. 20 LPA to 25 LPA in Salesforce domain. If you're getting into any service-based company, you can get around 15 to 20 depending upon how much offer shopping you are doing and how you are implementing and getting and grabbing an offer. Okay, after that, इफ इट्स लाइक कि आपको लग रहा है कि मैं सेल्सफोर्स सीखूं या नहीं और आपको जानना है कि क्यों सीखूं, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली. कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे प्लान करूं, इंटरव्यू स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करूं, क्या पूछते हैं सेल्सफोर्स कंपनी में जाने के लिए, स्विच के लिए कैसे रेज्यूमे बनाए, रेज्यूमे प्लानिंग कैसे करें, या चेक आउट माई टॉपमेंट लिंक बिल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. I have switched from a service-based company to a product-based company. Definitely, I can give you an idea to grab an opportunity, whether it's be a Salesforce, whether it's be any product-based company, into a higher salary and whatever you are having right now. So with all my experiences and my team experiences, because we are having a team of a lot who are into this domain, definitely I'll be giving you a best output. Because why to repeat the same mistake that we all did? From our experiences, definitely you can grip up and bridge the gap, time gap, and can move into the
नेक्स्ट साइकिल एंड ऑल. ओके, टू नो मोर कि सेल्सफोर्स को कैसे स्टार्ट करें, ट्रेलहेड में कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, डेवलपमेंट स्टार्ट करें, एडमिन स्टार्ट करें, एआई स्टार्ट करें, कौन कौन से मॉड्यूल को कवर करना स्टार्ट करें, कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें, सीवी कैसे बनाएं, चेक आउट विद मी. चेक आउट माय टॉप मिड लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फ्रॉम देयर यू कैन बुक अ स्लॉट विद मी, कनेक्ट विद मी पर्सनली, एंड यस, ग्रिप द बेस्ट आउट ऑफ द ऑप्शन दैट आर अवेलेबल. तब तक के लिए मिलते हैं. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. Where are you now?